हे हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑन मीन वैल्यू थियरम्स। ठीक है, अभी इसमें हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट है समरी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी कुछ किया था उसकी समरी शॉर्ट में देखेंगे, क्विक। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जो मीन वैल्यू थियरम के लिए हमें याद रखने हैं, सो दैट इन योर एमसीक्यूज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, और थर्ड है एमसीक्यूज देखेंगे। आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है तो किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे आपको वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज अ क्विक रिवीजन टेबल फॉर यू। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में रखा है सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस 3 थियरम्स। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे फर्स्ट 2 कंडीशंस जो है तीनों भी थियरम्स की वो सेम है। मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोलिस थ्योरम, एलएमवीटी और सीएमवीटी तीनों भी थ्योरम्स के लिए सेम कंडीशन है, फर्स्ट 2 कंडीशन ओनली। हाँ, नाउ इफ वी मूव ऑन टू थर्ड कंडीशन, देन सी for Rolle's theorem our third condition is that f of a is equals to f of b। LMVT के लिए कोई भी थर्ड कंडीशन नहीं है और CMVT के लिए क्या है, g dash of x should not be equals to 0। ओके, सो रोलिस थ्योरम में देखेंगे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है f of x के लिए, so we will get that there exists a point c such that f dash of c is equals to 0। और ये C कहाँ पे लाया होना चाहिए, A और B इंटरवल में। ठीक है, ये थी रोलिस थ्योरम के लिए। अभी LMVT के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर f of x कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C in the interval AB such that f dash of C is equals to f of B minus f of A upon B minus A। ठीक है, और CMVT के लिए देखेंगे अगर f of x और g of x कोई भी 2 फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और g dash of x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमें क्या मिलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C in the interval AB such that f dash of C upon g dash of C is equals to f of B minus f of A upon g of B minus g of A। ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ये बस एक क्विक रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, so that you will not face any problem while solving MCQs। ठीक है, अभी हम कुछ रिमार्क्स देखेंगे। अपना फर्स्ट यहाँ पे रिमार्क है, द कॉन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, सेकेंड जो रिमार्क है, रोलिस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ LMVT। सो व्हाई दिस इज सो, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलता है LMVT के लिए कि f dash of C should be equals to f of B minus f of A upon B minus A। Here in this formula, if we took f of A is equals to f of B, which is the third condition of Rolle's theorem, so what we'll get here, that is f dash of C is equals to 0। So हमने Rolle's theorem को LMVT की मदद से रिड्यूस किया है। कैसे, f of A is equals to f of B डाल के। ठीक है, therefore we can say that Rolle's theorem is a special case of LMVT। ठीक है, सिमिलरली अगर हम CMVT और LMVT को देखेंगे तो यहाँ पे अपना फोर्थ रिमार्क क्या कहता है कि LMVT is only particular case of CMVT if we take g of x is equals to x। ठीक है, यहाँ पे CMVT का फॉर्मूला हमें रिजल्ट क्या हमें मिला था कि f dash of C अपॉन g dash of C is equals to f of B minus f of A अपॉन g of B minus g of A। ठीक है, अगर इसमें हम g of x is equals to x डालेंगे तो हमें क्या मिलता है, g dash of x is equals to 1, डेरिवेटिव ऑफ x is equals to 1। ठीक है, f dash of C अपॉन 1 is equals to f of B minus f of A अपॉन B minus A, तो हमें क्या मिलेगा, f dash of C is equals to f of B minus f of A upon B minus A। ठीक है, और ये कौन सा रिजल्ट है, LMVT का रिजल्ट है। तो हमने क्या किया, सिंपली CMVT के फॉर्मूला से, CMVT के रिजल्ट से हमने LMVT का रिजल्ट निकाला बाय पुटिंग g of x is equals to x। सो अपना ये जो फोर्थ रिमार्क है, LMVT is a only particular case ऑफ CMVT, ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बाद में देखेंगे नेक्स्ट रिमार्क, विच इज
if we have a function f of x such that it satisfies all the conditions of LMVT. Okay, so first case है if f dash of x is equals to 0, तो हमें f of x क्या मिलता है, कांस्टेंट फंक्शन मिलता है. if सेकेंड केस क्या है, if f dash of x is greater than 0, तो हमें f of x क्या मिलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है. और थर्ड केस क्या है, f dash of x is less than 0, अगर ये less than 0 है तो f of x is a decreasing function. ओके, सो ये रिमार्क इंपॉर्टेंट है MCQ सॉल्व करने के लिए, इसे आप याद रखेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर MCQs. ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट MCQ. Which of the following statement is or are true? ओके, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें कौन सी ट्रू है वो ढूंढनी है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉलिस थियरम इंश्योर्स दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन अ कर्व द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेकेंड है LMVT इंश्योर्स दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन अ कर्व द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. Then CMVT can be deduced from LMVT. Rolle's theorem can be deduced from LMVT. Okay. अब ये चारों भी हमें देखने हैं कौन सा ट्रू है इसमें. फर्स्ट क्या दिया है, Rolle's theorem ensures that there is a point on a curve, the tangent at which is parallel to x-axis. Okay. So फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका ग्राफ भी देखा था, Rolle's theorem और LMVT का. ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, रोलिस थ्योरम का ग्राफ है. और ये जो सेकेंड ग्राफ है वो किसका ग्राफ था, LMVT का ग्राफ था. यहाँ पे देखेंगे एट पॉइंट C इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये LMVT के ग्राफ में देखेंगे कि टेंजेंट एट पॉइंट C इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑल्सो इट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, सो अभी यहाँ पे A और B में से कौन सा पॉइंट हमें ट्रू मिला है, ये फर्स्ट वाला. ठीक है, रॉलिस थ्योरम इंश्योर्स दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन अ कर्व द टेंजेंट एट विच इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें ट्रू मिला है. और LMVT के लिए हमने देखा था कि टेंजेंट एट अ पॉइंट C इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, सो ये B पॉइंट तो रॉन्ग है. ठीक है, हमें फर्स्ट पॉइंट करेक्ट मिला है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वी गॉट करेक्ट. Now move on to the third point which gives CMVT can be deduced from LMVT. हमने यहाँ पे रिमार्क्स में देखा था Rolle's theorem can be deduced from LMVT and LMVT can be deduced from CMVT. So which statement is true here? That is Rolle's theorem can be deduced from LMVT. अपना ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, सो यहाँ पे कौन से करेक्ट ऑप्शंस आए हमें, A और D. बाकी B और C हमें रॉन्ग आया है, हमने ये प्रूफ करके भी बताया है. सो वी विल गेट हियर ऑप्शन A करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट MCQ. ओके, यहाँ पे क्या है, इफ f of A is equals to f of B. ओके, इन LMVT then it becomes, फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट आएगा वो बताना है. ठीक है, ध्यान में रखना, इफ f of A is equals to f of B LMVT में डालो, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था. सो व्हाट विल बी योर आंसर, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड MCQ which is if f of x is equals to 3 sin 2x. ओके, f of x दिया है, is continuous over interval 0 to pi and differentiable over interval 0 to pi. Then by Rolle's theorem, the value of C is. In the first lecture, we saw how to solve such type of questions. Here it is clearly mentioned that f of x is a continuous function and f of x is a differentiable function. Okay, so just apply here Rolle's third condition, you will get the value of C. Okay, so what will be the correct option? Please comment me your answer in the comment box. Okay, let's see our fourth example. For which interval does the function x square minus 3x upon x plus 1 satisfy all the conditions of Rolle's theorem? Here it is clearly mentioned that we have to use Rolle's theorem. Okay, and these are your options. Okay, so let's see the solution step by step. What is asked here, for which interval does the function satisfies? Okay, so clearly here we have to find out what is the interval. Okay, so that is we have to find out the values for A and B.
ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1, एंड हियर वी हैव गिवन दैट it satisfies all the conditions of Raleigh's theorem, ठीक है. So if it satisfies all the three conditions of Raleigh's theorem, what is our third condition for Raleigh's theorem? That is f of a is equals to f of b. Just substitute the values of a in f of x and value of b in f of x. Okay, so what we'll get, a square minus 3 upon a plus 1 is equals to b square minus 3b upon b plus 1. Just cross multiply this and get your answer. What the equation we got here is a square minus 3a plus 3b minus b square is equals to 0. Okay, so instead of solving this equation, simply यहाँ पे जो हमें 3 इंटरवल्स ऑप्शन में दिए हैं, जस्ट सिंपली पुट देयर वैल्यूज एंड चेक योर आंसर फॉर इट. ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन जो है 0,3 वो पुट करके देखेंगे. 0,3 में हमें क्या मिला है, a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 3. वो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमें क्या मिलता है, 0 माइनस 0 प्लस 9 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 0. It satisfies first equation or not. Okay, so here we can clearly see that if it satisfies our first equation, therefore we can say that option A is correct. That is, we got our interval of 0,3. So here your first option is correct. Now let's move on to next MCQ, which is the value of C in the mean value theorem. F of b minus f of a is equals to b minus a into f dash of c for a1 x square plus a2x plus a3 in the interval a and b is. और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है. अभी मैं ये सम सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आपको होमवर्क है. जस्ट आई हैव गिवन यू अ हिंट हियर. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c हियर. ओके, and just take f of x is equals to a1x square plus a2x plus a3. Okay, so by taking f of x is equals to this, then follow these steps. Okay, what we have to find here, just f of a, then f of b, and just derivate this f of x. Okay, then you will get here f dash of c. So here if you see, f of b minus f of a is equals to b minus a and into f dash of c. So what is this? This is the result of our LMVT. Therefore we have to use here LMVT. By LMVT we know that f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. And here you will get your final answer. By equating the value of f dash of c, you will get the value of c. Okay, so please comment your answer in the comment box. Now let's move on to the 6th question. Okay, so here is the question. If f of x is equals to 4x square, then the value of c in this interval for which f of 3 minus f of 1 upon 4 is equals to f dash of c is. Again the similar question we have got here. That is, we have to find the value of c by using LMVT. Okay, so I hope you will solve this and comment your answer in the comment box. Okay, now let's move on to the 7th question. Okay, so here is the 7th question. The abscissa of the points of the curve y is equals to x cube in the interval minus 2 and 2, where slope of the tangent can be obtained by the mean value theorem for minus 2 and 2 is dash. Okay, so here let's understand this sum. Here we have to find the abscissa. Okay, so what do you mean by abscissa? So let's see here. In the graph, if you have a point P which has a coordinates x and y, then simply what does x means here is your abscissa, and what does y means here, that is your ordinate. Okay, so what in this question you are going to find abscissa means what, you have to find this x. Okay, so let's see the solution for this. What we have, f of x is equals to x cube means what, here y is equals to x cube is the equation given. Okay, y is equals to x cube is the equation given, and we know that y is equals to f of x. Therefore f of x is equals to x cube here. Okay, next
what will be the value of f of a and f of b? Here the interval given is -2 and 2. Okay, so f of a is equals to f of -2, we got here -8. Then f of b is equals to f of 2, which is equals to 8. So in the question here itself it is given that we have to solve this by mean value theorem. Okay, so by LMVT we may say that f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. Okay, what we got here, f of b, which is 8, f of a is -8. Okay, so just simply put this value, we will get the value for f dash of c, which is equals to 4. Then our f of x was x cube. Okay, so f dash of x will be 3x square. Then f dash of c will get 3c square. Okay, so simply just equate these both values. F dash of c is equals to 3 square and f dash of c is equals to 4. You will get the value for c. So here is the value for c, which is equals to plus or minus 2 by root 3. Okay, so which will be the correct option here? The correct option we will get is option A. Okay, so let's now move on to the next question. Our next question is, the function f defined by f of x is equals to x plus 2 e to the power minus x is. Now here just we have to check that the given function is increasing or decreasing, and if it is increasing, then for which interval it is increasing, and if it is decreasing, then for which interval it is decreasing. So let's move on to the solution. Here is your solution. Okay, for this sum we have to just remember remark number 3. If f dash of x is equals to 0, then f of x is a constant function. If f dash of x is greater than 0, then f of x is increasing function, and if f dash of x is less than 0, then f of x is a decreasing function. Okay, the same we have to consider for solving this question. Okay, so let's see in this how we can apply this. Okay, here our given function is f of x is equals to x plus 2 into e to the power minus x. Okay, so what will be our f dash of x? Our f dash of x is e to the power minus x, x minus 1. So by remark, our case 1 is f dash of x is equals to 0. Okay, so by solving this, what we got, x is equals to 0. So which simply means that for f dash of x is equals to 0, x should be equal to 1. Therefore, at x is equals to 1, we got f of x is constant. Okay, why this is constant? As our f dash of x at x is equals to 1 is 0. Okay, so this is our first case. By following remark, our case 2 is that f dash of x is greater than 0. Okay, so just simply solve this. Then we'll get x is less than minus 1. For f dash of x greater than 0, x is less than minus 1. Therefore, we can say that for f dash of x greater than 0, when we'll get this greater than 0 at x is equals to minus 1. F dash of x is greater than 0 simply means that f of x is an increasing function. For what value of x? For x should be less than minus 1. Okay. So from here we can say that our interval is minus infinity to minus 1. Okay, therefore we can say that from minus infinity to minus 1, f of x is our increasing function. Now consider the case 3, that is f dash of x is less than 0. Okay, by solving this we can get x should be greater than minus 1. Okay, so here we can simply say that f dash of x is less than 0 for all the values of x which are greater than minus 1. Therefore, f of x is a decreasing function. Why? Because f dash of x is less than 0. For what value of x? For greater than minus 1. Okay, therefore, the x can take value, f of x can take value from minus 1 to infinity. And from minus 1 to infinity, we can say that f of x is a decreasing function. So here we can see which option is correct. We got f of x is a decreasing function in minus 1 and infinity. Okay, and increasing function from minus infinity to minus 1. Okay, so here
our D option is a correct option. Okay, so now let's move on to the next MCQ, which is the function given is f of x is equals to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 is an increasing function in the interval. So here just see that our function is given f of x. Okay, so here you will comment me the answer. What will be the answer for this question? Okay, so here you have to just simply use remark number 3, what we have seen just now. Okay, so here f of x is given, just find f dash of x. What will be the f dash of x? And here they are asking for increasing function, then just solve for f dash of x greater than 0 and see the values for which values of x it is satisfying f dash of x greater than 0. Okay, so please comment your answer in the comment box. Now let's move on to our last question. Okay, here it is. Let f of x and g of x be the differentiable on 0, 2. Okay, such that f of 0 is given, f of 2 is given, g of 0 is given, and f dash of x is equals to g dash of x is given here. Okay, 0, 2 is our interval. Then the value of g of 2 must be, okay, here we are going to see what will be the value for g of 2. Okay, here you may see that the question is bit longer. Okay, so please don't afraid by seeing the MCQs which are longer. Okay, just simply keep this in mind that if the MCQs are bit longer, then the given things in the MCQ will be more. Okay, so more the given things, shorter will be your solution. Okay, so just solve this sum by using CMVT. All the things are given, just you have to apply here our Cauchy's mean value theorem formula or the result you will get from CMVT. Okay, just apply this, you will get your solution. Okay, and after getting your solution, please comment your answer. So thanks for watching. I hope that this lecture will be beneficial for you. Let's meet in the next lecture. In the next lecture, we are going to start our second chapter, that is Maclaurin series and Taylor series. Okay.